गाने में आती है ना सुबह, मैं अपने आप को संभल नहीं पाता हूँ। I would love to date her. Seriously? Interesting. Kill me. Censored. I can't tell you. मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ था? नदिया से दरिया, दरिया से सागर। Welcome everyone. This is Rohan here from the Cinema Chronicles. पब्लिक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक डिमांड पर हम हमारे गेस्ट को फिर से शो पे लाते हैं। We have the cute and chirpy Surbi Tiwari once again because the fans have been inboxing me and asking me, please call her once again. So here's Surbi once again. Hi Surbi. Hi Rohan, how are you? I'm good यार। यार इतनी फैन फॉलोइंग मुझे तकलीफ क्यों दे रही है? आपको देनी चाहिए ना। मुझे कह रहे कि वापस शो पे आपको बुलाइए, हमने आपने बुला लिया। Very good. ऐसे keep calling me again and again. अरे पर वो दिक्कत होती है ना, लड़कियां पिंग करती है तो आई एम हैप्पी, लड़के पिंग कर रहे हैं मुझे। I have a solution now. Then you can do something about that, no? तुम कुछ करो ना, तुम कर सकते हो। That you need to do ना, because आपके फैंस हैं, वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं ना। आई एम हैप्पी विद द फीमेल्स बाय द वे। Okay, तो ठीक है। I'll talk to them maybe, okay? You please talk to them, yeah. But it's been lovely. It's been lovely to have you once again because both your last shows were a hit on my channel. So really happy to have you back. Thank you. I'm excited. You're excited, but do you remember something? Like what? पिछले बार आपने कहा था कि 4 अल्फाज आप मेरे नाम पे कहेंगी इस शो पे, तो अब मैं रेडी हूँ सुनने को। जरा बताइए यार क्या थे वो अल्फाज। Okay, so 4 अल्फाज we had discussed, right? हाँ ठीक है, तो पहला अल्फाज है you're amazing. दूसरा है कि you're brilliant. तीसरा है you're a great speaker. और चौथा है you are very cute. Done. Okay, I like the fourth one. Okay, you don't like the other 3, then I take them back. नहीं, fourth one is the best. The rest 3 are okay. I'm happy with it. But चौथे ने मेरा दिल खुश कर लिया। Okay, चलो। Thanks a lot for those sweet words of yours, Surbi. Surbi, today we have called you because we are going to play a rapid fire. हम हमेशा शो करते हैं आपके साथ में। सोचिए थोड़ा सा चर्पी क्वेश्चंस करके आपसे आपके जहन में जो बातें चल रही है वो शो में बाहर आ जाए। चलिए, तो 25 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चंस। ओके, रैपिड आपको फटाफट फायर करना है उसको, मतलब बोल दीजिए सीधा, धमाकेदार। चलो, रेडी? ओके। व्हाट्स ऑन योर माइंड राइट नाउ? कि जल्दी से मुझे एक और शूट भी करना है अभी, एंड मुझे क्या डिनर में खाना है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। खाना इज वेरी अच्छा, खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सुप्रीम, विच आई नो अबाउट यू। खाना बहुत पसंद है, टाइम से खाती है और बहुत खाना इनको चाहिए। अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है, आप जाएंगी? डिपेंड्स, कभी कभी कोई सीजन देख के लगता है कि यार जाना पड़ेगा, लाइक शहनाज गिल वाला, इट वाज अमेजिंग। फिर कभी कभी किसी को हाँ। और ऐसी कौन सी? मैं कह रही थी शहनाज गिल बोली वाला जो हमारा सीजन था, पिछला सीजन, उसमें शहनाज गिल और सिद्धार्थ सब थे ना, तो बहुत अमेजिंग था वो वाला। लेकिन फिर कुछ होते हैं जिसमें यू नो बॉयज वो वाला सीजन था ना, वो बिल्कुल मन नहीं है उसमें जाने का। दैट डिपेंड्स कौन जा रहा है और साथ में। यार मुझे मौका मिले, राखी सावंत अगर है तो मैं पहले जाऊं। सच, I really would mean it. मजा आएगा, मतलब इतनी पब्लिसिटी मुझे भी मिल जाएगी। राखी सावंत को देखेंगे लोग, मुझे भी देखेंगे। I'm sure. So I'll let you know when the auditions happen and then you can try. कैसा? Please let me know. I'll propose Rakhi Sawant by the way. Perfect. I would love to date her. Seriously? Interesting. Yeah, it would be interesting. Kill me. By the way, chalo, we on the rapid fire. If you weren't an actress, what would you be?
So I was an engineer already. So being an actress was an option, a choice which I made. नहीं तो I was an engineer already. नहीं तो फिर MBA करके I would have been somewhere into marketing or finance or something. Okay. So the craziest thing which Surbhi has done for her love यार, बताओ. The craziest thing. Yeah. सच बताना, झूठ मत बोलना. Maybe maybe like ये मे बी के बाद okay. मे बी के बाद जो हंसी है ना, इस हंसी में बहुत चीजें छुपी हुई है. बताओ. दूसरी लड़की के बारे में I made up stories because the person used to like them and I spread those rumors so that they don't like them anymore. Wow. So we are getting to know the unknown secrets of Surbhi on this rapid fire. आपने अपने प्यार के लिए इतनी बड़ी चीज की यार, मतलब बहुत बढ़िया था ये. You seem to be a utter romantic. Yeah, I am actually. That is the truth. Okay. चलो, one more secret out on this show. Yeah. After all, I am a Yeah. Shah Rukh Khan fan यार. So standards are already very high. हम शाहरुख खान के फैन तो हम भी थे, इसलिए जब मेरा फर्स्ट क्रश था मैं घर पे आके चिल्लाता होता उसके नाम से. उसका नाम विजेता था. Okay, Vijeta, you are hearing this? That was Vijeta and Davina. I remember. तुम दो लोगों के नाम चिल्लाते थे. वो क्रशेस थे ना, क्रशेस तो दो हो सकते हैं. हाँ. थोड़ी डेट कर रहे किसी को. Okay. Okay, if you held a world record, what would it be? Maybe talking. I can talk like non-stop, or maybe sleeping. I can sleep also like for 2-3 days continuously maybe. मेरे भी जहन में ये दो चीजें थी कि आप यही बोलने वाली हैं. है ना? Talking and See, sleeping. you know me so much. क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब भी मैं इनके साथ शो करता हूँ मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता, यही बोलती जाती हैं. ऐसा क्या? चल ठीक है. I'll stay quiet. No, but I love to talk with you anytime. You tell me to have a show with you every day. I'm going to do it every day, Really? by the way. Thank you. बहुत मजा आ रहा है दोस्तों सुरभि के साथ फिर से शो करने के लिए. मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे बारे में भी इतने अच्छे इन्होंने अल्फाज कहे हैं, दिल खुश हो गया है. आगे बढ़ते हैं. सुरभि, यू हैव टू चूज फ्रॉम देम. आई विल गिव यू 6 ऑप्शंस. 6 एक्टर्स हैं, सेलेक्ट कर लो. ओके? किस, फर्स्ट इज किस, Okay. डेट, स्लैप, हाँ. किल, मैरी एंड वॉक ऑन अ बीच. द ऑप्शंस आर रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर एंड आयुष्मान खुराना. Too much hotness in just one line you said. Oh my god. ठीक है. तो सबसे पहले तो आयुष्मान खुराना I'd like to marry. A perfect marriage material. Okay, and then I'd like to date Siddharth Malhotra. And I'll kill Ranbir Kapoor because he's been taken and he's been ditched and he's been like doing so many things all the time. So I don't think I have space कहीं पे भी उसकी life में. So it's better I kill him. Okay, so now I'm left with ditch, slap, and what else? Kiss, ditch, and slap, and Ranveer Singh, Shahid Kapoor, and one more Arjun Kapoor. So I will ditch Arjun Kapoor, slap Ranveer Singh, and kiss Shahid Kapoor. We'll go on to the next one. Have you cheated on anyone till date? सच बताओ. No. No? People have. अच्छा, people have. Okay, we'll not go into it. Who do you Yeah. prefer to be stuck in a lift with? Sunny Deol, Rajkumar Rao, and Kareena Kapoor. And give me the reasons. See, not Kareena Kapoor. She's very gorgeous, but not Kareena Kapoor. All right. I would prefer Sunny Leone, and the reason is because she's way too hot. I really want to see her once इतना closely. Lift is वैसे भी छोटी सी होती है. I really want to see her, and I already know she's very cute. She's very nice even by nature, and looks तो भाई उसकी bomb है. So I just love her. I love Sunny Leone. Sunny Deol is one of the beautiful human beings, by the way, who are there Yes. currently. Yes. Yeah. Even I love her. If you love her, even I love her. I don't mind. But she's actually very beautiful. I think she's the most beautiful girl like in Bollywood. Actually. Yeah. Okay, Surbhi. Yeah. So Surbhi loves Sunny Leone. Even I Yeah. love Sunny Leone. जो सुरभि करेंगे वो हम भी करेंगे क्योंकि हमें भी अच्छी लगती है Sunny Leone. Anyways, if you could get a chance to live someone's life, whom will it be and why? Shah Rukh Khan, undoubtedly. Because
I don't think there is any actor in the whole world who has reached that level. And I don't think there is anyone even near to that level, because there are so many Hollywood actors who come to India and we know them, but we are not like those die-hard fans. And you know, Shah Rukh has fans all over the world. Then number two, he's a very family man kind of a person. I mean, even after so much of stardom, money, fame, he is still grounded. And his life story is obviously very inspiring. I really want to. He is Surbhi, definitely everyone would like to be a शाहरुख खान. लेकिन ये आप वो जो गहरी है ना इस शो पे, अगले शाहरुख खान शायद मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए क्यूट बोल दिया. आपकी सारी फैन फॉलोइंग मेरे पीछे आ जाएगी इसके बाद. चलो अच्छा है ना. It's nice. I would love to. अगली बार 8 अल्फाज बोलूंगी 4 की जगह. 8 नहीं 20 बोल दो यार. चलेगा मुझे. ठीक है. तो मैं आपके मेल फैन फॉलोइंग से भी रिक्वेस्ट ले लूंगा. आई डोंट माइंड. है ना. ठीक है. कूल. डन. Okay, give one word for these stars: Jacqueline Fernandez, Hotness. Priyanka Chopra, Bipasha Basu, Katrina Kaif. Okay, so Jacqueline is hotness की दुकान. Then Priyanka Chopra, like queen, she's the queen. Okay, and Katrina, she's the princess. I love her. Okay, and Bipasha is sexy. Bipasha is definitely sexy. Priyanka is too good. I love Jacqueline Fernandez lips यार. बहुत बढ़िया है. She is hot. Hotness. She's too hot. She's too hot. Because Yeah, especially in that song दिल संभल जा जरा. वो जब वो गाने में आती है ना तो मैं सब नहीं, वो जब गाने में आती है ना सुबह, मैं अपने आप को संभल नहीं पाता हूँ. And my wife tells me, तू क्या कर रहा है? मैं बोला संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ यार, ये सामने आ गई है. ऐसा सबका हाल है, including girls as well. Including girls? अरे बाबा, ये मुझे नहीं पता था. अब now you know. Now I know. So I need to ask my wife also यार. क्या तुम भी संभाल नहीं पाती हो खुद को? जब जैकलीन स्क्रीन पे आती है, I need to ask her about this now. Let me ask her. Okay. Biggest turn off and turn on for you. Turn off is like people who try to invade into my privacy. मतलब you know too much की मतलब जबरदस्ती का. Yeah, and turn on. I mean, it can be anyone, but yeah. And turn on someone with a great voice and who has a really nice way of talking. You know, they talk in a, कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ही subtle होती है और बहुत ही you know they have that bass in their आवाज़, and then they talk in a very poised, very subtle manner, like वैसे you know. तो सुनो दोस्तों, सुरभि ने क्या कहा है. उन्होंने कहा जिनकी आवाज अच्छी है वो प्लीज आगे बढ़िए, लाइन लगाइए. शी स्टेज इन बॉम्बे, लाइन अप करिए, रिक्वेस्ट भेजिए और शादी के लिए प्रपोजल डाल दीजिए जल्दी. ओके? यस आइए. या प्लीज, उसमें शायद मेरा भी प्रपोजल होगा. बी रेडी. ओके, भेजो. भेज रहा हूँ मैं अभी वाइफ को बताती हूँ. वेट अभी मैं करती हूँ. बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल से यार सुरभि है, आई एम रेडी टू लीव यू. Well, would you like to date your ex-boyfriend again? No. Okay, let's move to the next. Best move This to was get such a guy. a big no. I was like, no. That's why I said let's go on to the next. Best move to get a guy. Best move to get a guy. Well, I haven't made any moves yet. I mean, the guys have, so they must be aware of what moves they have to make. Best pickup line you have ever received. सारी छापी हुई होती हैं actually, you know. Like अभी तक मुझे I haven't received any ऐसी pick-up line, you know, where I feel oh my god, wow, ऐसा कुछ नहीं है. सब छापी हुई है मूवीज से, पुरानी मूवीज से, नई मूवीज से, जहाँ हमने देखी नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के जस्ट यू नो छाप रहे हैं सब लोग. कुछ ओरिजिनल नहीं है आजकल. Yeah. Have you ever pretended to know something? I don't know. मतलब अब like see if all you the go time. to a party or you know like आजकल तो pori, if you go to a pori and then you sitting like अभी 4 लोगों के साथ you know just behave like अभी कुछ बात कर रहे हैं and you don't know about it, like सेंसेक्स के बारे में नहीं पता है तो नहीं पता है, like yeah अच्छा of course वो तो है ही. right चलो you'll have a drink. चलो you need to show that you know not everything. everywhere but yeah there are people जिनके सामने you have to be you know ऐसे behave करना पड़ता है कि हाँ भाई पता है हमको. सबकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं. जी.
Have you ever been? जी. Have you ever been caught by your parents with your boyfriend? No. चलो, let's move ahead. No comments. Most Congrats. नहीं, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. क्या हुआ था? नहीं, क्या है कि I was caught with my first girlfriend at my home by my mom. आगे it's censored. I can't tell you. ठीक है, इसको कट करके we'll get on a personal call. No. I can't discuss those things with you. Okay, let's continue. Okay, next. Most funniest and weirdest thing about you. Funniest is कि the people who know me ना, they know कि मैं सच में I behave very weirdly, when I am ऐसे घर पे and all. अच्छा. You can find me singing any weird songs with any lyrics and I fit them and I just keep singing them. Any weird lyrics. मतलब कि I may not be able to beat ये Coca-Cola too and all that, but I am really bad at that. Okay. That's okay. So that's okay. Yeah. And the weirdest, this is only the weirdest. I make up lyrics and I sing. I keep them singing, and like if I'm working if I'm cooking something for myself, or I'm just making some green tea, so you can hear me singing any random shit, like anything. I feel very embarrassed to tell you, but it is very weird. एक काम करो सुरभि, बालक आपको शिक्षा की जरूरत है. आप रोहन पापा जी के साथ अंडर आ जाओ क्योंकि वो सिंग भी करते हैं. आपको अच्छा सिंगर बना देंगे. Very good. Rohan, why don't you sing something? I should sing something? Yeah. Okay, चलो आपकी दरख्वास्त से हम आपकी ये आप कह रही है कि गाने के तो हम गाते हैं अभी आपके लिए. चलो. तो अभी I have followed Rajesh Khanna a lot, so I will be singing a Rajesh Khanna song. Okay. So let me just okay. ये शाम मस्तानी या फिर नदिया से दरिया. Okay, I'll start with नदिया से दरिया. ठीक है? Okay. नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, ओ जाम डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम. That's it. Wow, you sing beautifully. Wow. थैंक यू सुरभि. बालक आपको शिक्षा की जरूरत है. 5,000 रुपए मंथली फीस है हमारी. आ जाइए न्यू बॉम्बे में, हम आपको सिखा देंगे. ठीक है, डन. So we are waiting for that. Thanks a lot, by the way. But you're amazing. Okay. Seriously. But you're amazing. Thanks a lot. Give one word for them, okay? Give one word for these actors. Okay. Manoj Bajpayee. Legend. Of course. Ananya Pandey. Yeah, you really want No to comments. say? Move it. मतलब very silly. Abhay Deol. He is a very nice actor, so I'd say someone who is deserving, but he didn't get that much. He hasn't. Potential which was not tapped properly. Agreed. Alia Bhatt. Started as a silly person, but now she's good. Aditya Roy Kapoor. Hot. Tiger Shroff. Nice, he's got nice moves. I like him. He's a nice human being, I feel. As a human being, He's very nice. Very nice. Disha Patani. Sexy. ये वर्ड Sexiest. ये वर्ड सेक्सी बोलो मत. सेक्सी वर्ड जब आप बोलते हो ना, मैं अपने होश खो देता हूँ. No, but she is. She is. I'm sure you She like has me. those cute, sexy, curvy legs. अच्छा, नहीं, I thought वो पूरी की पूरी She है. is. Randipura. I love his voice. That bass I was. Agreed. Survi, have you ever lied in my interview till date in a rapid fire? सच्ची बताना. No, actually, you didn't ask me questions where I would think twice before अच्छा. answering. And even if you did, I think I answered. अच्छा, मतलब next time से आपको controversial questions पूछता हूँ रुकिए अगले rapid fire में. So Survi, tell me the first thing you notice in a guy. मतलब देखने में ना, Okay, because मतलब सबसे जो पहले भी तो आगे हम- देखते ही है ना, nature तो बाद में पता चलता है. ये मतलब आगे जब इनकी शादी होगी तो पहले हाइट देखेंगी. तो बड़े हाइट वाले लोग प्लीज लंबी कतार में आई आइए. क्या आवाज हो गई.
हाइट और आवाज के लिए तो मैं हूँ यार, हाइट के लिए कोई और ढूंढ लो. Okay, हाँ. Okay, if you get a chance to date a girl, will you? Like, it's not like I don't have that choice, you know, because I'm not interested. Okay, not interested. Let's move ahead. One change you would like to see in our One industry? change. Yeah. I want the whole thing to just, you know, be reduced, number one. Because we are going, like, there are too many platforms Yes. coming in and they're just selling porn. And the second thing is, I want new faces to get their credits, you know. Because Agreed. known faces जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े known faces होते हैं तो even दो जो जिन्होंने छोटा रोल किया है but उनका भी important रोल है, they don't get their due credits इतना अच्छे से. Yeah. Right. I guess you're perfect on that. I think a very nice gesture sort of you there said on a Thank show you. here. Okay, what does your career look like in 5 years from now? Where I see myself 5 years from now. Yes. Waving off my window on my birthday and saying, yeah, thank you everyone, thank you so much. I love you all. क्या बात है, मदोश कर दिया ये लास्ट 3 वर्ड्स में. But Surabhi, it was fun having you. It was a quick rapid fire. हमने बहुत एंजॉय किया. आपको इस बार 10 में से 10 देंगे हम, बिकॉज इट वॉज वंडरफुल. आपने दिल से आंसर किया, सच्ची में आंसर किया, मेरी तारीफ की. बहुत ऐसी चीज़ें जो बोली, वर्डिंग्स बोले और आई लव यू बोला एंडिंग में, तो वो मैंने सोच ही लिया मेरे ऊपर है. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. So any feedback, anything you want to say before I we want end to this say show? keep calling me Rohan once again and like again and again so that you know I have loads of alphas for you. So loads of alphas, lots of love from our team to you, Surabhi. It was beautiful having you over here. We'll meet you once again with some controversial questions. Surabhi, it was wonderful having you over here. हमने बहुत enjoy किया ये rapid fire. And अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी. I think next month we'll have another episode Yes, with you. definitely. Thank you so much, Rohan. And that will be on your career. We will look forward for your projects. Yeah. Best of luck for all your projects in the future, जो भी आप कर रही है. एंड आपको ऐसे सक्सेस मिलती जाए, पब्लिक डिमांड बढ़ती जाए, आपके फीमेल फैन फॉलोअर्स मुझे पिंग करते जाए. एंड आउट ऑफ दोस हॉट फीमेल फैन फॉलोअर्स आई वुड फॉलो देम टू. Wow. Yes. Yeah? Now that's a nice offer now. Okay, everyone. Follow him. That's a right offer. That's a right offer from your end, for me. Yes. Thank you so much. You're welcome, Surabhi. Thanks a lot. Stay tuned for shows. I think she's a wonderful human being, wonderful actress, and definitely a go-getter in life. Best of luck, Surabhi.